हे गाइस, वेलकम टू ऑल न्यू व्लॉग। और मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे एंड दिस टाइम हम लोग जा रहे हैं टू अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमको यहाँ का वीज़ा, यहाँ का स्टे इन वन ऑफ द 4-स्टार होटल्स फ्री में मिला है बिकॉज देयर इज़ दिस प्रोग्राम इन दिस कंट्री दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड। विच लोकेशन वी आर गोइंग, वेयर वी आर गोइंग, दैट आई विल रिवील इन सम टाइम, बट या इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। Hey guys, good morning. From new country, from new city, and we are finally revealing our destination. We are here in Saudi Arabia, Riyadh, and अभी हम लोग एयरपोर्ट पे है and we were trying to connect to Wi-Fi, but however as usual whenever we go in new country challenge होता है मोबाइल नंबर का, because to connect to free Wi-Fi on airport it always requests you for a mobile number. But you know what, over here in Riyadh they have a super amazing system. I'll just show you. Internet access dispensing machines, like Wi-Fi dispensing machines. All you have to do is select language as English, then connect to Wi-Fi. Then you'll have to select one of the identities that you want to give. I actually had selected my passport. Then you have to scan the first page of your passport over here, and from here you'll get such a receipt which gives you the user ID and password which you can enter in your phone and easily access. And सो हाउ डिड वी गेट ओवर हियर, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूँगी. एंड हाउ माई वीज़ा एंड माई स्टे इज़ फ्री वो भी मैं आपको बताऊँगी इन सम टाइम. सी यू. Hey guys, so I'm here to talk about Saudi's stopover plan. So recently they have launched a new plan which is a stopover package where we get 4 days transit visa along with free accommodation in one of the 4-star hotels of Riyadh or Jeddah, whichever city you land in, and you can get 4 days to roam around the entire city or even the country. So which is a very good plan. We have to just book the tickets via national carrier of Saudi Arabia, which is Flynas or Saudi Airlines. So we have to book it, get the transit visa, and then we have to select the hotel where we want to stay. And we have booked a 1 BHK suite room in this park in by Radisson Hotel. So which is a very very good deal to explore a country on the go. Hey guys, so we are here at Spar. If you see मेरे पीछे there is this Spar का सुपर मार्केट, और हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोग ने जो अभी एज ऑफ द वर्ल्ड टूर बुक किया है उसका ये पिकअप पॉइंट था. एंड वी बुकड दिस टूर. सो आप ये टूर लाइक यू कैन बुक दिस टूर्स वाया वायाटर, गेट योर गाइड, टूर रडार. बट व्हाट आई डिड वाज आई फाउंड अ कॉन्टैक्ट ऑफ रियाद हाइकिंग टूर्स फ्रॉम गूगल. देन आई कनेक्टेड with them across in WhatsApp. The best thing about connecting with them in WhatsApp was, so basically this tour is around 300 Saudi riyals per person, and we were 2 people, so I asked for some discount, so I got 20 riyals per person discount. So for both of us I had to only pay 540 riyals. तो वैसे मेरे पैसे बच गए. You can actually book via any of the apps also if you don't want to go there, but I'll share their WhatsApp details as well as their website details in the details section below. You can also connect with them and you can directly book the tours. So यहाँ से कुछ 1 घंटे के दूरी पे the drive is going to be like for 1 hour from here. उसके बाद there is going to be a little bit of hiking, and then we will see the sunset. So we have finally arrived over here. If you see, ये एक ending है, and then there is another which is over there जहाँ पे हम लोग चल के जाएंगे. So we have finally reached edge of the world. मैंने जो आपको पहले दिखाया था that was on one side, and अभी हम लोग we are actually going to walk towards the edge of the world, hike जिसको बोलते हैं. So I was just googling around and then I got to know कि this place is known as edge of the world because this is one of the most unexpected and dramatic geographical elevation cliff in the Riyadh
in Saudi Arabia, in Riyadh, and hence it is called as edge of the world. Because अगर आप वहाँ पे like if when you go over there and you see, you'll find all you'll not find any other hemisphere. It will be like a flat surface, and you can see the rest of the Saudi from over here. That's what the Google at least says. And right now when I showed you that one view, वहाँ पे भी हमको वैसे ही लगा कि it was like one cliff and आगे पूरा flat surface था from where you can see all other hemispheres. Now we are walking towards the another cliff जहाँ पे लोग चल के जा रहे हैं. I'll just show you. कितना ड्राई है ना ये, कुछ सुपर ड्राई. आजू कुछ नहीं, सिर्फ बिजली उत्पन्न हो रही. एक्चुअली and this is where we are at the end. If you see this, and इसके आगे कुछ भी नहीं है. It's like a flat surface, and as I told you previously also कि this is one of the most unexpected cliffs that has geographically been created over here in Saudi, in Riyadh, and they therefore call it as edge of the world for them. As when you stand over here, you can see only a flat surface and nothing more. We can see the horizon of this cloud with us. That's why it's called end of the world. Like the sky is actually meeting the ground, you know. It's like melting together. This is the other end. And guys, if you can see, I am literally at the edge of this Riyadh's world over here. क्योंकि अगर मेरे पीछे आप देखोगे तो you will see sky meeting the land, and we are not sure of how much altitude or how much height is this, but this actually feels surreal. Another cliff. Hey guys, so we are done with the sightseeing of this edge of the world of Riyadh tour, and अभी now we are walking back जहाँ पे हमारे cars रुके हुए हैं, 4x4 cars रुके हुए हैं, and वहाँ पे probably वो लोग ने खाने की तैयारी भी शुरू की होगी, because in this entire package the dinner is included, like water bottles and dinner is included. हाँ, खाना इधर ही बनता है.
the Saudi coffee, also known as kava. It's like herbal tea, not coffee. It's like what? Herbal tea. tea. Then that will be good for me. What is that? Mamul. This is Mamul. This is a whole wheat dessert from Saudi Arabia and this is Saudi coffee. ये मिक्सचर में खाया जाता है तो हमें सर्व किया गया है. Hey guys, so we are back and अभी हम लोग रूम में चेक इन वापस कर रहे हैं. बट ओवरऑल आज का टूर काफ़ी इट वॉज़ वेरी अमेजिंग फॉर अस. द ट्रैवल वॉज अबाउट 1.5 hour. But the most amazing thing was that hike that we did. It is not exactly a hike, it is like a walk वाला thing. The only thing is कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, काफ़ी इरेगुलर स्पेस है, मतलब पत्थर पड़े हुए हैं एंड ऑल. बट इट वॉज रियली अ लॉट ऑफ फन टू गो ओवर देयर, टू वॉक देयर. एंड ऑल्सो लाइक डिनर सिंस जो हमने किया वहाँ पे, इट वॉज लाइक टिपिकल सेटअप, मतलब नीचे बैठ के. देन फर्स्ट हमने वो कॉफ़ी कावा बोलते हैं, मतलब सऊदी कॉफ़ी विच इज़ ऑल्सो नोन एज कावा, वो पिया. Then we had like rice, like zarda pulao and chicken macaroni along with some fresh salad. तो काफ़ी अच्छा था. Then like the best thing that I liked is about the sky. वो colors इतना change हो रहा था. Like it was initially blue, then जैसे ही थोड़ा सा dark होने लग गया, it turned into pink. While we were leaving, it was dark enough, but फिर भी वो crimson red color था. So the sky was very astonishing over there. So if you ever visit Riyadh, I would definitely recommend going to this Edge of the World tour, because you will really get a very surreal experience as your trip ends. So that's it for my day 1. कल हम जाएंगे लोकल कुछ देखने and I'll let you know that. Ciao. Good morning and welcome to all new vlog. And in the same city, we are still in Saudi in Riyadh. हम लोग ने होटल से चेकआउट कर लिया है and right now we are sitting here in Bolt. And जैसे कि कल हम लोग ने आपको बोला था कि यहाँ पे Uber ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे Bolt भी ऑपरेट होता है. The rates are somewhat similar only. Right now from our hotel to the Kingdom Tower, which is situated in the city center, it costed around 19 Saudi riyals. And what? So we are going to the famous tower of Riyadh, which is known as Kingdom Center. Kingdom Center is basically a shopping complex mall है, and above that at the 99th floor there is a Skydeck observatory. So Skydeck observatory visit करने जा रहे हैं to watch the view of entire city. Let's see what we have in store. And what is the entry fee for that Sky Tower? I think it's 50 riyal. I think so. Okay, the mall is free, right? Yeah. Yes. Okay. Let's see. How much is the cost? We are here in this Kingdom Center mall and अगर आप देखो तो यहाँ पे सारे बिग ब्रांड्स आपको दिखेंगे. गुची, क्लोई, टैग्यू, डायो. एंड यहाँ पे तो ऐसे भी कुछ ब्रांड्स हैं जो मैंने कभी इंडिया में देखे ही नहीं है. It's beautiful. And ये जो बिल्डिंग है, it's about 99 floors. On the 99th floor you will be able to find that Sky Tower.
गाइस, सो वी आर हियर एट द 99th फ्लोर जहाँ पे ये टावर ब्रिज है, स्काई टावर ब्रिज है. सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इज़ इन लाइक वी शेप एंड ये वी शेप के बीच में जो ब्रिज बनाया हुआ है उसको वो स्काई टावर ब्रिज बोलते हैं. एंड इट्स एक्चुअली ऐसे कर्व टाइप है. इफ आई ट्राई शोइंग यू फोटोज ऑल्सो. सो अभी राइट नाउ आई एम इन द मिडल जहाँ पे ये साइड इज़ ऑल्सो टेपरिंग डाउन एंड दिस साइड इज़ ऑल्सो टेपरिंग डाउनवर्ड्स. व्यूज़ आर वेरी ब्रेक टेकिंग यहाँ से. आई थिंक रात को ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज द सिटी वुड बी लिट. सब जगह लाइट्स रहेगा. सो रात को ज़्यादा हैपनिंग रहेगा यहाँ पे आना. एंड यहाँ की एंट्री फीस वे 69 सऊदी रियाल्स फॉर एडल्ट एंड 23 सऊदी रियाल्स फॉर किड्स. 64 Saudi riyals, it's somewhere around 1400 INR, and I think it's worth. But according to me, since I've like seen a lot many sky bridges during night or at evening, तो जो city view आता है वो रात को I definitely would recommend you guys to come at night or in the evening over here. This curve that you see is the actually V जो हम लोग को नीचे से बाहर से ये बिल्डिंग का दिखता है. so deep बाप रे. मतलब इट देख के ऐसा डर लग रहा है. कांच है तो सही है. सो गाइस, दिस इज़ वेयर वी वेर. ये जो आर्क दिख रहा है हम लोग वहाँ पे थे. सो यहाँ पे इफ़ यू सी मॉस्क ऑफ किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद मॉस्क है. दिस इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट मॉस्क in the world, and also the highest mosque over here in Saudi, which is in Riyadh. And under there is a praying room. I cannot go inside. Bhagyaraj is inside. Probably I'll ask him to take a shot. Hey, you can go. Hey guys, so we are done with the Sky Tower tour and वहाँ पे कुछ pictures थे रात वाले, वो काफ़ी अच्छे थे. तो as I said before also कि I would definitely recommend any one of you coming over here. आप ये रात को करो so that you will get to see the lit beauty of this entire Riyadh city. अभी आज के लिए सिंस हमारा फ्लाइट है 7 o'clock का and it's already 1:30 now, so we are planning to roam around over here in this particular mall जो कि बहुत ही बड़ा है. And after that we'll have our lunch and head towards airport around 4 because immigration clear करना है. And it would take some time for us. Hey guys, hi. So अभी हम लोग यहाँ पे फूड कोर्ट में आए हैं नीचे. And they have Subway, they have McDonald's, they have KFC, सब कुछ है. But the issue is कि उनके पास वेज फूड नहीं है. So apparently I have stopped eating chicken. So मुझे वेज खाना है, मतलब I can't eat chicken. तो हम लोग उसके लिए ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल रहा है. द लास्ट ऑप्शन दैट आई विल बी हैविंग इज़ कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँगी. एंड भाग्यराज एनीवेज इट्स मिन्स चिकन या मिन्स मीट तो वो खा लेगा. बट स्ट्रगल इज़ रियल ब्रो. मतलब यहाँ पे वेज कुछ है ही नहीं. सो फाइनली वी आर हियर इन सबवे एंड वी हैव फाउंड समथिंग विच इज़ वेज. आई विल टेल यू व्हाट. तो मैंने जब उनको पूछा ऑप्शन तो दे टोल्ड मी कि यहाँ पे इतना सारा सब्ज़ी है वही डाल के आपको दे सकते हैं बट इट वोंट बी टेस्टी यू नो. सो दे हैव सो दीज आर द वेजेस. देन दिस इज़ माई वेजी टोस्ट. दिस इज़ भाग्यराज सबवे एंड वी हैव माउंटेन व्यू. Everyone, so I am again at the Saudi International Airport, which is also known as King Khalid International Airport. And हमारा जो ये stop over tour था, which was a very short tour for 2 days, has come to an end. And I feel कि हम लोग ने जो 30 hours का stop over था उसका full advantage उठाया because we did one of the greatest tour जो people when they come in Riyadh they do, which is Edge of the World. वो भी हम लोग ने cover किया. आज हम Sky Bridge पे भी गए थे. So it was quite a fast but adventurous tour, and also with all the lavishness that I enjoyed staying in one of the 4-star hotels over here. So it was really nice. And now we are heading towards yet another city in one of my, not my but Bhagyaraj's favorite country. Like he wanted to visit that from a very long time. तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं. I'll reveal the location in short time.
Hey guys, welcome to our YouTube channel. So we are at King Khalid Airport in Saudi Arabia. Our next destination, that was the main destination, is Jordan. So जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग. So सऊदी एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे हैं बिकॉज स्टॉप ओवर पैकेज लेके हम सऊदी अरेबिया भी घूम लिए हैं. सो जॉर्डन में एक्चुअली इंडियंस के लिए देर इज़ वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी, बट रिसेंटली देर आर लाइक मैनी पीपल हु हैव बीन एस्केपिंग जॉर्डन टू यूरोप. सो बहुत सारे इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है. सो वी गोना ट्राई आवर लक ऑन वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी, बट वी हैव एन एडवांटेज विच विल प्ले देयर, होप सो. वी हैव एन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, so that's one of the advantages, I think. Let's see when we go there. So yeah, let's see for the week-long adventure planned in Jordan. See you at the destination. Bye.